Right, guys. So let's continue from here. Number of sigma and pi bonds in I-butene, 1 butene, 3 ion. So but 1, 2, 3, 4. 1 butene means the first double bond. The double bond comes after the first carbon. This is the first carbon. And 3 ion means the triple bond comes after the third carbon. Okay. And add in the remaining bonds. Now, how many sigma and pi bonds are here? So we've got 1 and 2 and 3. The double bond has 2 pi bonds. So 3 pi bonds are there. Then 7 sigma bonds are there. Okay, because only one option has 3 pi bonds as the answer. Not 5 pi bonds, obviously, not 5 pi bonds. Okay, not A. A is wrong. But only 3 pi bonds. 2 pi bonds over here in the double bond, triple bond, and 1 pi bond over here. Overall positive reaction potential value predicts the process is if you have a positive electrode potential value, yes, that means the reaction is feasible. Okay, electrode potential value, E naught. If this is positive, then yes, the reaction is feasible, it's gonna work out. If E naught is negative, the reaction is not feasible. And feasible is also known as spontaneous, okay? Feasible can also be called spontaneous. Spontaneous means it's gonna occur on its own given the right conditions. A radiation from naturally occurring radioactive substance as seen after deflection by a magnetic field is in one direction R. Okay, so a radiation is coming out and it's deflected by the magnetic field in one direction. So which rays can they be? Alpha rays, beta rays, both alpha beta rays, or neither of them. See, if you have a naturally occurring radioactive substance, and this is a magnetic field, the radiation is coming in. Now, if this is a positively charged particle, as in case of alpha rays, they will be deflected upwards. Okay, the alpha rays are deflected upwards. And if we talk about the beta rays are going to be deflected in the opposite direction because they are negative. Okay, the beta rays. So they can be alpha rays or can be beta rays. Can be both of them. Can be either of them. So if the last option is either of them, either alpha or beta, then that's the answer, option D. Okay, because it says that it deflects by the magnetic field in one direction only, not in both the directions. So that one direction can be only upwards or it can be only downwards. So if it's alpha, it's only upwards. If it's beta, it's only downwards. Therefore, either alpha or beta. And how did I determine the direction being upwards or downwards? By using Fleming's left-hand rule. Okay, Fleming's left-hand rule. Fleming's left-hand rule ke mutabik, magnetic field is going inwards. The charge is coming from the left side. Then the force is going to be upwards. For positive charges and negative charges का हमेशा positive charge के opposite होता है. Fleming's left-hand rule always tells the direction for positive charges only. Okay, the direction of force on positive charges. So the rate of reaction in general can be increased by all of the following factors, except for by increasing the temperature. Yes, you do increase the rate by increasing the temperature. So that's not the answer. They're asking for exception. Catalyst also increases it. Increasing the activation energy does not increase the rate, rather it decreases the rate. Remember, the lower the activation energy, lower the EA, the higher would be the rate of the reaction. Okay, and vice versa is true. So if there's a higher EA, there will be lower rate. So increasing the EA will reduce the rate, not increase it. Okay, now the sweetest of all sugars is fructose actually. Fruit sugar is the sweetest of all. When the vapor pressure of water at room temperature is 23.8 millimeters Hg, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose with a mole fraction of 0.2 is equal to, now to calculate the vapor pressure with a mole fraction given. So
total vapor pressure is just the sum of individual vapor pressures, right? So it's going to be the 23.8 added to the vapor pressure of sucrose. Now, an important thing to note over here, because it's being added, it cannot be less than 23.8, okay? So option which is less than 23.8 is already out. Both of them are out. Now we are left with 19.04 or 24.2. And this one is also out because it's lesser. So the only option that is left is 24.2. Okay, because the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose has to be added to calculate the total vapor pressure. Oh wait, they are not asking for the total vapor pressure. They're asking for the vapor pressure of sucrose only. All right, that's fine. Let's calculate that. The vapor pressure of water at room temperature is 23.8. The vapor pressure of aqueous solution of sucrose with a mole fraction of 0.2 is equal to, mole fraction means the moles of sucrose upon the total moles. It's the mole fraction, which is 0.2. If you take the mole fraction, okay, so they're just asking for the partial pressure of sucrose. So partial pressure of sucrose is going to be the partial pressure equals mole fraction multiplied by the total pressure. That's how you calculate the partial pressure of sucrose. Okay, this is a formula in chemistry. Partial pressure of sucrose equals the mole fraction of sucrose multiplied by the total pressure. Now, the total pressure is 23.8. Okay, vapor pressure of water is given. Let's assume it's 23.8 being the total pressure. So the mole fraction is 0.2. When you multiply that by 23.8, what do you get? That's not the answer. Let's try another technique over here. Okay, guys, this question will be solved using Raoult's law. Okay, because see, the partial pressure or the vapor pressure of this aqueous solution, the vapor pressure is still due to water. Sucrose is not going to evaporate up above the container, right? It's also due to water. So Raoult's law says that if you need to calculate the vapor pressure of an aqueous solution, which will be due to the water in this aqueous solution, it will equal the mole fraction of the solvent in the mole fraction of the water component of this aqueous solution multiplied by the partial pressure of the solvent itself, partial pressure of pure solvent. Okay, pure solvent, meaning partial pressure of pure water. So mole fraction of the solvent multiplied by partial pressure of the pure solvent. So the mole fraction of the solvent is going to be, because they gave us the mole fraction of sucrose, which was the solute, right? So solute का अगर 0.2 है तो solvent का 1 में से इसको minus कर देंगे, ठीक है, क्योंकि total 1 होता है. So 1 minus 0.2 will give you the mole fraction of the solute, ठीक है, of the solvent, sorry, solute के ये given है, this is the solute, and solvent is going to be 1 minus 0.2. This is the mole fraction of the solvent, multiplied by the partial pressure of the pure solvent, partial pressure of the spray or vapor pressure of the pure solvent, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure water, 23.8. Now you multiply them, you get 19.04, which is correct. Option A is correct. Okay. The number of moles of nitrogen dioxide, which contains 16 grams of oxygen. Now, NO2 can be broken down into 1 mole of nitrogen and 2 moles of oxygen atoms, right? They're saying 16 grams of oxygen are there. Now 16 grams of oxygen atoms अगर है आपके पास,
So let's first calculate the number of moles of oxygen, right? It's gonna be mass upon atomic mass. Atomic mass of oxygen is 16. There's just 1 mole of oxygen atoms available, right? Now, if you have 1 mole of oxygen atoms available, use the mole ratio to calculate the moles of NO2. Moles of NO2, ठीक है? Moles of NO2 are half the moles of oxygen, क्योंकि मोल रेशियो क्या है, 1:2 का है. तो ऑक्सीजन के जो भी मोल्स होंगे NO2 के उसके हाफ होंगे, ठीक है? तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो इसका 0.5 मोल्स है. डू वी हैव दैट एज एन आंसर? यस, ऑप्शन बी, 0.5 मोल्स. ठीक है. टिंचर ऑफ आयोडीन इज आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ठीक है, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं. अल्कोहलिक आयोडीन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये वाला आयोडीन है जिसको आप आयोडीन भी कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली शो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म दोनों. फेरोमैग्नेटिज्म मीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर. पैरामैग्नेटिज्म मीन्स somewhat magnetic character. Dimagnetism means no magnetic character. What is the mass of same number of potassium present in 11.5 grams of sodium? What is the mass of the same number of potassium atoms होगा ये, as are present in 11.5 grams of sodium? So if we calculate the moles of sodium, it's gonna be mass over mr or ar, which is 11, right? सोडियम का मास कितना होता है? 11 होता है. Yeah. Let's simplify this. One 1.04, यानी कि 1 मोल्स तकरीबन है सोडियम के. ठीक है, अगर ये 1 मोल सोडियम के हैं तो इसका हम मास ऑफ पोटेशियम में कन्वर्ट कर सकते हैं. मास ऑफ, वो कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ मोल्स या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. चलो लेट्स अज्यूम वो अगर कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो फिर मास क्या है, तो मास इक्वल्स मोल्स इनटू mr होता है. अब ये जो मोल्स आए हैं, अगर यही मोल्स पोटेशियम के भी है तो पोटेशियम का जो mr होता है वो होता है 39. आंसर आ गया आपके पास 39 ग्राम. सी 39 होता है ना मास. सोडियम का 23 नहीं होता? 23 होता है. सोडियम का मास 23 होता है, तो अगर ये 23 है तो ये 0.5 आंसर आ रहा होगा. हाँ, 0.5. अब 0.5 मोल्स को अगर आप 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास? 19.5. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सोडियम का मास 23 होता है, ठीक है ना, 11 नहीं होता. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 25% NaOH सॉल्यूशन? मोलैरिटी, अब ये देख लीजिएगा, 25% NaOH सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 25 ग्राम्स NaOH प्रेजेंट है इन 100 cm³ सॉल्यूशन. ठीक है. अब आप मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं. मोल्स इज मास ओवर mr, राइट? mr इसका क्या है? 23 + 16 + 1. तो 24 + 16 कितना हो गया भाई? 24 है, तो +6 हो गया तो 30 हो गया, 40 हो गया. 25/40, 5/8 हो गए. 5/8 moles are present in 100 cm³. cm³ को भी dm³ में कन्वर्ट करना है, राइट? तो 100 cm³ इज 0.1 dm³. अब मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे? बल्कि 0.1 dm³ की जगह हम इसे ऐसा कर लेते हैं, 100/1000 कर लेते हैं. सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/10 dm³ आ गया. अब मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम.
in DM cube. So moles है इसके 5/8 डिवाइडेड बाय 1/10 जो कि मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, राइट। हाँ, 50/8 आंसर आ रहा है, यानी कि 25/4, यानी कि सिंप्लीफाई करें, 6.25, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑल you've done is just converted the units from grams per cm cube to grams per dm cube। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम ग्राम्स पर cm cube to moles per dm cube, सॉरी। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी था वैसे, लेकिन चलो छोड़ो शॉर्टकट। when ethylene ozonide is treated with sodium dust, we get, अब इथाइलिन, ये रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक का ही। you know that zinc is a reducing agent, right? Now you know that zinc is a reducing agent. If zinc is a reducing agent, then it's going to reduce ethylene ozonide. Whenever this reduction takes place, the products are always aldehydes or ketones. In this case, from ethylene ozonide, you get formaldehyde. Formaldehyde, which is also known as methanol. ठीक है, तो methanol AL वाला जो है वो आपका आंसर है। ये आपके एल्कीन के ओथोनॉलिसिस वाला रिएक्शन का क्वेश्चन है। When fused lead bromide is electrolyzed, फ्यूज्ड का मतलब है मोल्टन, तो ये सॉलिड से मोल्टन स्टेट में जब कन्वर्ट होगा मोल्टन में, तो मोल्टन में ये अपने आयॉन्स की फॉर्म में बन जाएगा, लेड आयॉन्स एंड ब्रोमाइड आयॉन्स, बोथ ऑफ देम आर इन द लिक्विड स्टेट। अब क्योंकि लेड आयॉन्स आपके कैटायॉन्स है, तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे और लेड बना लेंगे, लिक्विड स्टेट में डायरेक्ट आपका लेड निकलेगा, और ब्रोमाइड आपकी ब्रोमीन गैस बनाएंगी एट द एनोड, क्योंकि एन आयन है तो ये एनोड पे जाएगा। So lead appears at the cathode, not at the anode. Lead is deposited at the cathode. Yes, that's the answer. And bromine appears at the anode. Which compound shows maximum hydrogen bonding with water? Ether hydrogen bonding नहीं करता। C2H5O का भी हम पता नहीं चल सकता कि क्या है। बहरहाल बाकी देखते हैं। ये फिनॉल है। फिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि बेंजीन सॉल्युबल इतनी नहीं है। एन हेक्सानॉल, अब हेक्सानॉल है आपके पास, और ये C2H5OH, हाँ ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल है, CnH2n+1 ओ। नहीं, ये इथेनॉल भी नहीं है। कि इथेनॉल होता तो ये 6 होता। फिनॉल तो आउट हो गया, ईथर आउट हो गया। अब इधर बी और डी, डी में देखते हैं। एन हेक्सानॉल है, 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद फिर आएगा आपके पास OH, काफी लंबी चेन भी है। C2H5O ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? दो कार्बन्स, 5 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। हम्म।
H2 है तो फिर ऑक्सीजन आ नहीं सकता यहाँ पे। ऑक्सीजन इसके आगे आना चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड के साथ आना चाहिए। डबल बॉन्ड तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो ये फॉर्मूला में मुझे थोड़ा एरर लग रहा है इसके। क्योंकि अगर ये एथेनॉल होता ना, एथेनॉल C2H5OH होता, अगर ये C2H5OH होता, जो कि मुझे लग रहा है कि C2H5OH ही है, तो फिर ये आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्कोहल्स हैं, राइट? Ethanol versus an hexanol. Now, more soluble is the one which has a shorter hydrocarbon chain. Hexanol ki hydrocarbon chain is much longer. The longer hydrocarbon chain is less soluble because it's hydrocarbon, it's organic. Ethanol's hydrocarbon chain is shorter, so it's going to be more soluble. So option B is correct. And what is the configuration of chromium? Now, chromium is an exception, remember? So 3d4, 3 and 4s2 होनी चाहिए थी, but होता क्या है आपकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है टू मेक इट 3d5 and 4s1. सो बी इज करेक्ट. क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन, रिमेम्बर. इन्होंने भी ये गलत कर दिया है, और दिस इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? बेरियम क्लोराइड में तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ कोवेलेंट होगा. हाँ, अमोनियम में भी होता है. Bf3 पॉजिटिव, Bf4 पॉजिटिव होगा शायद. NH4 पॉजिटिव होगा, ये BH4 पॉजिटिव होगा. अगर ये BF4 है, कि BF3 तो नॉर्मली भी होता है, ठीक है. हाँ, अगर BF4 है तो फिर बात हो सकती है कि अमोनियम वरना आंसर है आपका. BF3 तो नॉर्मली होता है, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता. अगर ये NH4 है तो इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, BF3 में नहीं होता, क्योंकि बोरॉन परफ्लोराइड में नहीं होता. जिंक की वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, जिंक की एक ही वैलेंसी होती है, जिंक 2+. अब अच्छा, मोस्ट आइडियल गैस कौन सी है इनमें से? मोस्ट आइडियल आपकी वो होगी जिसकी सबसे वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, क्योंकि आपको अगर याद हो, आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इट हैज नो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. जिसकी सबसे कम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, वो उतनी ही आइडियलिटी की तरफ करीब जाएगी. तो हाइड्रोजन में सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी. और वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? एमआर पे डिपेंड करती है, वो एमआर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमआर पे डिपेंडेंट होते हैं. तो क्योंकि हाइड्रोजन का एमआर सबसे छोटा है, इसलिए इट्स द वन दैट हैज द लीस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हैज मोस्ट आइडियल. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रेजेंट इन कोक? तो कहते हैं कार्बन को, या कार्बन मोनोऑक्साइड को. कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है. ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इन दोनों में भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन खुद अकेली भी प्रेजेंट होती है, एक ब्लास्ट फर्नेस में ही प्रेजेंट होती है. हाइड्रोजन अलबत्ता नहीं होती कहीं पर भी, सो हाइड्रोजन इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम हाइड्रेशन पावर? Hydration power would mean that it should be able to produce the most negative hydration, delta H hydration. ठीक है, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब क्या है? Hydration means when you have an atom in the gaseous state, or an ion that dissolves in water. And when it dissolves in water, what does it do? It forms bond. It forms bonds, right? You get an aqueous ion, and while the bond is formed, energy is released out. Okay? Because this is an exothermic process. Now, the stronger the bond, the greater the hydration energy. Because stronger, the greater will be the energy released. Now, what does this bond formation depend upon? It depends upon charge density. Charge density means
द वन दैट हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड द ग्रेटेस्ट चार्ज। कि मैग्नीशियम का चार्ज इन्होंने गलत डाले, मैग्नीशियम 2+ होता है। अब इन सबको अगर आप अरेंज करें, सोडियम अगर यहाँ है, पोटेशियम उसके नीचे होता है, मैग्नीशियम उसके साथ में ही होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम के भी नीचे होता है। तो यहाँ पर अब सबसे छोटा रेडियस किसका है? अगर आपको याद हो तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी रेडियस श्रिंक करता है, तो सोडियम का रेडियस बड़ा है, मैग्नीशियम का छोटा है। और ऊपर से नीचे जाते हुए रेडियस बढ़ता है, तो कैल्शियम का भी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा आपके पास मैग्नीशियम का हुआ। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज द आंसर। सबसे छोटा रेडियस है और सबसे बड़ा चार्ज भी है। मतलब कैल्शियम जितना ही चार्ज है, लेकिन कैल्शियम का क्योंकि रेडियस बड़ा है, तो कैल्शियम की चार्ज डेंसिटी कम होगा। क्योंकि चार्ज डेंसिटी एटॉमिक रेडियस की इन्वर्स होती है, और चार्ज की डायरेक्ट होती है। तो मैग्नीशियम आंसर है। Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? इनके लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख देते हैं। अब आर्गन कोर 4s3d, आर्गन कोर आयरन की 3d5 होती है, तो क्योंकि ये 3d5 है तो ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो ये मैक्सिमम होती है ये इसलिए। Which of the following have inert gas configuration, यानी कि स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी है, उसके लिए आपको क्या ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे जिंक का है 30 प्रोटॉन नंबर, ये 28 हो गई। 28 की कोई गैस है आपके पास? प्रोटॉन नंबर 28, प्रोटॉन नंबर 28 की कोई गैस मेरा तो नहीं ख्याल की है कोई, नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से टाइटेनियम को देखा जाए, टाइटेनियम होता है 22। ठीक है, उसमें से 4 निकाल लो, 18 बचे। यस, 18 की आर्गोन होती है, टाइटेनियम आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटिंग एजेंट? नॉट लोकेटिंग एजेंट, अब ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। एनहाइड्रिन तो होता है, रुबिनिक एसिड, ये आप जरा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से लोकेटिंग एजेंट्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? Gets oxidized itself and reduces the other compound with which it is reacting. Reduces the compound it reacts with. ठीक है, हाँ। इनमें से ये आपके पास कीटोन है, तो कीटोन तो नहीं हो सकता क्योंकि कीटोन के पास कोई ऐसा रिड्यूसिंग पावर नहीं है। C3H7OH ये अल्कोहल है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बॉन्ड्स नहीं टूटते, और ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में एक खास बात क्या होती है? डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में ये टर्मिनल हाइड्रोजन होता है जो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि ये एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो गया, जिसको ये हाइड्रोजन मिला वो चीज रिड्यूस हो गई। तो एल्डिहाइड इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स रिड्यूसिंग द अदर कंपोनेंट विद व्हिच इट इज रिएक्टिंग। Which of the following transition metals in its ground state have unpaired electrons in an s orbital? एक कॉपर है और एक क्रोमियम है, दोनों को देख लेते हैं। क्रोमियम जो है वो होगा 4s1 3d5, कॉपर होगा 4s1 3d10। ये दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट हैं, ए बी और डी बी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में आपके एस ऑर्बिटल में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। विच वन इज नॉट रिलेटेड विद इवेपोरेशन? इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, प्रोड्यूसेस कूलिंग, मतलब इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट्स नॉट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक।
Property of liquid that is measured by polarimeter, optical activity, something you need to learn. Sodium nitrate on heating is gonna give, it does not give the same products as group 2 metals because this is group 1. Group 1 nitrate says that heated they give nitrites, sodium nitrite. How many balloons of capacity 0.25 dm cube can be filled from hydrogen at how much ATM? ये नहीं दिया हुआ. At let's say normal room temperature per se. अगर ये एसटीपी की बात हो रही है ना, इन्होंने कोई वैल्यू दी होगी हाइड्रोजन की भी कि how many of these balloons can be filled with let's say 5 grams of hydrogen. ये कोई मास गिवन होगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है. Whereas let's try it out. 0.25 dm cube balloon कैपेसिटी है. अब हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है, हम अज्यूम करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है. अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखे हुआ है, 1 मोल का मतलब है कितना वॉल्यूम है? 22.5 डीएम क्यूब. अगर एसटीपी की बात हो रही है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एसटीपी की बात हो रही होती है, ठीक है. 1 मोल एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.5 डीएम क्यूब. तो अगर ये 22.5 डीएम क्यूब है तो 0.25 के कितने बलून्स फिल कर सकेगा? इसको 0.25 से डिवाइड कर देंगे, 2250 आ जाएगा. 2250 को आपने डिवाइड करना है 25 से. 90 आंसर आ रहा है. उन्होंने आंसर 200 दिया हुआ है. तो फिर लेट्स सी, फिर ये और ऑप्शन अगर है तो. नहीं, 90 ही आंसर है फिर आपका. लेकिन अगेन अगर क्वेश्चन पूरा हमें पता होता कि कितने वॉल्यूम की बात हो रही है तो फिर हम कर सकते हैं. अगर 1 मोल की बात हो रही है तो आंसर 90 है. ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया. द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 आर N2O5 के बॉन्ड्स. सो एक नाइट्रोजन है आपके पास, एक और नाइट्रोजन है आपके पास, 5 ऑक्सीजन है. एक नाइट्रोजन तो दूसरा नाइट्रोजन. अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है इनका तो इस पे आपके पास बचते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8. एक ही लोन पेयर और एक ही लोन पेयर बचेगा. ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होगा. तो फिर एक और तरीके से ड्रॉ करते हैं. लेट्स से ये सिंगल बॉन्ड्स है, उसने एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया. लेट्स से इन्होंने डबल बॉन्ड्स बना लिए. तो अब ये दोनों सेटिस्फाइड है, बैलेंस्ड है, राइट. इनके पास अब भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसके पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है. उस तब ने ये लोन पेयर यूज किया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसने यूज किया इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. हो गया पूरे. N2O4 हो गया. अच्छा, अभी भी एक ऑक्सीजन मिसिंग है. ठीक है, तो उस एक ऑक्सीजन को हम कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, इन ऑक्सीजन की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है कि नहीं? यहाँ से अगर एक सिंगल बॉन्ड बनता है
ये ट्रायल एंड एरर से ही करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ देखें आप, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में अगर हम एक ऑक्सीजन ब्रिज लगा लें और इन दोनों पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी लगा लें, तो ये तो कंप्लीशन हो गई, ठीक है इसकी। नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड, ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो गए। अब इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, राइट, और इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो दे कैन यूज द लोन पेयर्स टू प्रोड्यूस वन एंड वन डेटिव बॉन्ड विद एन एडिशनल ऑक्सीजन एटम। तब बस ये भी पूरा हो गया। सो डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। Crystal system having all sides unequal and angles that are 90 is gonna be orthorhombic, ठीक है। SN2 can be carried out by, if it's SN2, it's carried out by primary alkyl halide, okay। अगर SN1 होता, it would be carried out by tertiary alkyl halide, ठीक है। और secondary alkyl halides क्या करता है, can undergo both, one as well as two। 15 grams of urea is dissolved in 180 cm cube of water. The relative lowering of vapor pressure is gonna be, okay guys, so relative lowering of vapor pressure is actually equal to the mole fraction of the solute. That's Rolle's law as well. Mole fraction of solute. Now to calculate the mole fraction of solute, we'll need to know the moles of the solute and the moles of the solvent for the total moles, right? Because that's the formula of mole fraction. So first calculate the moles of urea. Moles of urea, mass of urea divided by molar mass of urea. What is the formula for urea? It's CONH2 twice, right? So its mass turns out to be 60. If you add all of them together, just doing it directly, the 0.25 is the answer over here. Then we need the moles of water. How to calculate the moles of water? Well, we know that the density of water is 1 grams per centimeter cube, right? So 180 cm cube would mean 180 grams of water. 180 grams of water will give us the moles of water as well. Moles of water are going to be 180 upon 18, which is 10 moles, right? Now the mole fraction, calculate the mole fraction of urea. It's the mass of urea, sorry, the moles of urea is 0.25 divided by the total moles, which is 10.25, right? 10 plus 0.25 total moles. This turns out to be 0.024. Just solve it. So option A is the correct answer. If this type of question aa jata exam mein, you do it in the end, okay? Because there's a lot of calculation involved. Ksp of silver chloride is 2 times 10 to the power of 10 mole squared dm to the power minus 6. The maximum concentration of silver ions is going to be, if you have silver chloride and it is sparingly soluble, it's going to dissociate into silver ions and chloride ion, right? Now, let's assume the maximum concentration of silver is X. Okay? Same would be the case with chloride. That's going to be the maximum concentration of chloride, right? Because the mole ratio is 1:1. How do you calculate the KSP? KSP equals concentration of silver multiplied by concentration of chloride. It's going to be X multiplied by X, yani ki X squared. So this X squared equals 2 into 10 to the power of 10.
Now to get rid of the square, we put square root on both the sides. Now this is going to be under root 2 multiplied by 10 to the power of 5. Now we don't have under root 2 over here. I think this is negative 10 because all the options have negative in their power. This is going to be negative 5. Now square root of 2 needs to be learned. 1.41 into 10 to the power of minus 5. Option B is correct. Which of the following has the least electron affinity? Now, electron affinity being the least would mean that it's going to be least likely accepting electrons. Okay. This is carbon. This is nitrogen. What is this? I think this is oxygen. 8 and 16. This is oxygen. 7 is extra. And then this is fluorine. Now, obviously, nitrogen, oxygen, and fluorine are quickly going to accept the electron because of their high electronegativity. So it's going to be carbon. Carbon might have the least electron affinity. Because nitrogen, oxygen, fluorine are the most electronegative elements of the periodic table, right? This accepts electron very quickly. This accepts electron very quickly. This also accepts electron very quickly. Carbon accepts the slowest, so it's going to be A. The shape of SnCl2 in chloride is so tin chloride itself is not in the textbook, but if we draw out the structure, tin will have a bond with a chlorine, another bond with a chlorine, and it will have two of its electrons free because tin belongs to group 4A. Okay, tin belongs to group 4A, so it will have two of its electrons free. Because two of its electrons are free, this shape is not going to be straight, it's going to be bent. So because it's bent, it's also called angular. IUPAC name for this complex ion is, okay, fine. First of all, we need to see if this complex ion is positive or negative. So obviously it's going to be positive because the chloride after it is negative. So if it's positive, then that means it has to be platinum and not platinate. So the ones that have platinate as the answer are wrong. This one is wrong. And so B is out, A, C, and D are left now. Next thing to note over here are to identify all the different types of ligands that we have. We've got amine group in here, nitro group in here, bromo, chloro. Okay. So this has to be arranged alphabetically. So amine has to come first. This has to be triamine. Okay, all of them are triamine. Then must come bromo. Yeah, chloro. ठीक है, ब्रोमो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो हो जाए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. नाइट्रो, ट्रायामीन, 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 ठीक आउट है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो. तो सब में एक ही नाम दिया हुआ है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो प्लेटिनम, फोर क्लोराइड, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो प्लेटिनम, नाइटोरो, नाइटोरो स्पेलिंग मिस्टेक बस देखनी है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो प्लेटिन, प्लेटिनम. इन दोनों में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. ये इन्होंने रिपीटेशन कर दिया. वैसे अगर इसका एक्चुअल नाम देखा जाए
तो वो यही है, ठीक है। ट्रायामीन, फिर ब्रोमो क्लोरो होना चाहिए, क्लोरो ब्रोमो लिखा है। ट्राई अमीन ब्रोमो, क्योंकि बी कम्स फर्स्ट। क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम क्लोराइड। दिस शुड बी द नेम व्हिच इज नॉट इवन देयर, ठीक है। और हाँ, प्लैटिनम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 4, प्लैटिनम 4 क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, 4 भी है भी वैसे, या कोई और नंबर हो सकता है? लेट्स सी। इसको कैलकुलेशन कैसी होती है इसकी? देखिए, इसके ऊपर +1 है ना, हमें पता है कि क्लोराइड पे भी -1 होता है, तो इस पे +1 होगा, तभी तो ये बैलेंस आउट हो चुका है। तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करके इक्वल टू +1 करना है आपने। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, तो एक्स। क्लोराइड का है -1, ब्रोमाइड का भी है -1, नाइट्राइड का भी है -1, और अमीन का तो होता नहीं है। इन सबको इक्वल टू +1 कर देना है। तो फिर सब जब वहां जाएंगे तो x इक्वल टू +4 हो जाएगा, तो यस दैट्स करेक्ट। तो यही आपका नाम है, ठीक है। फिर 138 over 139, rate equation is given. Product where A and B are present in, question ही half है। बहरहाल अगर आपसे ये क्वेश्चन, ऐसी कोई क्वेश्चन आए ना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें पहले आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो जब भी रेट इक्वेशन जो गिवन होती है, इसमें जो ये ब्रैकेट्स में नंबर लिखे होते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, और इनकी जो पावर होती है ना, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे बी की पावर यहाँ 1 है और ए की पावर 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए, तो ऑर्डर जो है वो आपका 2+1 है, यानी कि कितना है, 3 है, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो ए की पावर आपने बता देनी है 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो बी की पावर बता देनी है आपने 1, ठीक है। और आपने इस रिएक्शन के ओवरऑल इक्वेशन पे नहीं जाना, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन से कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ रेट इक्वेशन से आपसे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल सकता है, रेट इक्वेशन से या फिर बेसिक इक्वेशन से। बेसिक इक्वेशन गिवन नहीं है, तो रेट इक्वेशन से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने आपसे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा, क्योंकि इसलिए इन्होंने आंसर ए दिया है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है। P2O5 is a hygroscopic powder which sublimes at, ये वैल्यू आपने बुक से देख लेनी है। A body of mass 2 kg absorbed 10 joules of radioactive radiation, then absorbed dose of radiation in rad is, I think they're saying कि absorbed amount in rad is, absorbed energy in rads is, ऐसा कुछ करके पूछा। Okay guys, so rad is actually a unit of radiation that is absorbed, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक यूनिट होता है, द यूनिट इन विच रेडिएशन इज एक्सपोजर इज मेजर्ड, ठीक है। एंड एक और यूनिट होता है जिसे कहते हैं आप ग्रे, ग्रे इज इक्वल टू जूल्स पर केजी, ठीक है। तो ये जूल्स जो केजी में गिवन है ना, तो 1 रैड जो होता है वो 0.01 जूल्स पर केजी के इक्वल होता है, यानी कि 1 रैड इक्वल 0.01 ग्रे। तो आप अब इसको यूज करते हुए आंसर निकाल सकते हैं कि if 10 joules is absorbed by 2 kgs, तो ये पहले फाइंड कर दें कि the radiation absorbed in grays, in gray क्या होगा। तो gray equals joules per kg, right? तो 10 upon 2, which is 5 joules per kg is the radiation absorbed. Now once you have that, you can calculate the radiation in rads. So in rads, it's just going to be, just multiply this by 0.01. So 5 multiplied by 0.01, 0.05 rads आ जाएगा, सही है। 0.05 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻², तो द रेडिएशन इन रैड इज 5 × 10⁻², ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर से है, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर से ये। A disk, a hoop, and a sphere, same mass, radius, are rolled down from a frictionless inclined plane, which has the greater speed of reaching the ground.
फास्टेस्ट स्पीड किसकी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा। Okay, guys, so for this question, there's a special formula that has a long derivation behind it. You don't need to know the derivation, just know this formula. Final velocity equals 2gh over 1 plus c square root, where c represents the constants of each of these in the moment of inertia. Now, moment of inertia of the disk is 1 upon 2 mr squared, right? 1 over 2 mr squared. So this constant is c. 1 upon 2 is c. Loop is mr squared only, and sphere is 2 upon 5 mr squared. Now, based on this equation, the value of c over here is 1 over 2, the value of c over here is 1, and the value of c over here is 2 over 5. According to this equation, because c is in the denominator, so the smaller the value of c, the greater would be the velocity, the final velocity with which it reaches the ground. Because the sphere has the smallest value of c, therefore the sphere reaches the fastest, and hence has the greatest velocity on reaching the ground. Okay, greatest final velocity on reaching the ground. A logic gate has four inputs. Its possible input combination will be. Now we need to know the type of logic gate that has four inputs. Now see guys, four terminals would mean that you've got any four of these terminals over here, right? This is a hypothetical situation. Four inputs. Now in a logic gate आप दो टाइप के inputs ही दे सकते हो सिर्फ, या तो आप जीरो दे सकते हो या आप वन दे सकते हो, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। अब अच्छा, ये तीन टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हैं जिनकी शेप्स आपको पता होने चाहिए। हैंड आपका ऐसा नजर आता है, ठीक है, ऐसे गोल करके ये, और आपका इस तरह से पीछे से थोड़ा कर्व होता है, आगे से भी कर्व होता है, और नॉट आपका इस तरह का होता है जिसमें एक सर्कल लगा होता है, ठीक है। बाद में फिर कभी बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है इनका। मैं इसकी तरह बात कर लूँ ऐसा ऐसा कोई लॉजिक गेट जिसमें आपके पास चार टर्मिनल्स हो, तो पॉसिबिलिटी कितनी है इनपुट कॉम्बिनेशंस की। तो अगर वो चार टर्मिनल्स ये है 1 2 3 4, राइट, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। तो ए में आपके पास कितने इनपुट्स आ सकते हैं, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, राइट। तो ए में दो टाइप्स ऑफ इनपुट्स आ सकते हैं, बी में भी जीरो वन आएगा, सी में भी जीरो वन, डी में भी जीरो वन। उन सबको मल्टीप्लाई करते टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगी, जो कि 16 आ रही है आपके पास, ठीक है। A maintenance crew is working on a section of a three-lane highway, only lane open to the traffic. Only one lane open to the traffic, पर पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है। Now the result is much lower of a traffic flow. Do cars on a highway behave like? The molecules of an incompressible fluid, the molecules of a compressed fluid, yeah, both A and B. Eight. Working on a section of a three-lane highway, only lane open to traffic. The result is much slower traffic flow. Compressed fluid या incompressible liquid? Well, अगर compressed fluid होता और एक लेन खुलती तो ये बहुत क्रश करके निकलता, स्पीड से निकलता। तो incompressible fluid ही आपका आंसर होना चाहिए। A square coil of side 16 centimeter has 200 turns and rotates in a uniform magnetic field of a magnitude of 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volts, what is the angular velocity of the coil? EMF के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? EMF equals to N A omega B sin theta, राइट। अब पी की एमएफ दिया हुआ है तो साइन थीटा तो वन ही होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आपको दिए हुए कितने, 200। एरिया ऑफ द कॉइल दिया हुआ है, स्क्वायर कॉइल जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर का एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया के लिए साइड इंटू साइड करते हैं, 16 इंटू 16 करेंगे, लेकिन याद रहे ये सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों के 10⁻², 10⁻², करके इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब 16 का स्क्वायर निकालेंगे जरा, आंसर आएगा आपके पास 56।
इंटू 10⁻⁻4। इसका एरिया आ गया। एंगुलर वेलोसिटी से कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी पूछी है आपसे, और बी की वैल्यू भी गिवन है 0.05 टेस्ला, और ईएमएफ भी दिया हुआ है 12। अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 12 को अपनी जगह रखेंगे, बाकी सबको इस तरफ भेज देंगे। 200 × 256 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.05 इक्वल्स ओमेगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, -4 ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया ऊपर। इस तरह से 5 इंटू 10⁻⁻2 है, तो -2 ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा, तो नीचे भी सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अभी दो जीरो ये गए और ये 10⁻2 गया। ठीक है, तो 2 बच गए सिर्फ। अब हो गया आपके पास 12 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 256 इंटू 5। ठीक है, अब 2 6 12 हो गया, ये भी चला गया। चलो भाई, अब ये 5 फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है। अगर इसको मैं अच्छा 6, 2 3 6 होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16 हो गया वो। सही है। अब इसे 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 5 कर लेते हैं। और 5 2 10 होता है, तो ये भी गया। ठीक है, और 2 6 12, 2 4 8 है, ये भी गया। अब क्या हुआ, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 64 बच गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3000 को आपने डिवाइड करना है 64 से, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 375/8 आ गया। ठीक है, तो 46.8, समझो 47 आंसर आपके पास आ गया। सी, यस, सी इज द आंसर। ठीक है, नवाब साइन थीटा लगा के आपका आंसर आया। 146, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बॉडीज एंड लाइट रेज फॉलो। ये आइंस्टाइन जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। AC EMF of V equals 200 sin 10 to the power of 10t, sin 10t होना चाहिए। Volt is concerned to a choke of negligible resistance. In order to produce a current of amplitude 1 ampere, the inductance of the choke should be how much? ठीक है। Okay guys, so this is a question। अच्छा, इस क्वेश्चन ने काफी टाइम वेस्ट किया। पहली बात ये, इस क्वेश्चन की वर्डिंग में यहाँ मिस्टेक है। ये 10 मिस प्रिंटिंग हुई है, 10⁻t लिखा है, विच इज नॉट दिस। इट्स एक्चुअली 100πt। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर दें, बस अब बाकी हो जाएगा ये। आपको इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 200। ठीक है, ये सर्किट बन रहा है, एसी सप्लाई एक इंडक्टर से कनेक्टेड है। आपसे इंडक्टेंस पूछ रहे हैं कितनी होगी। आपसे पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड करंट का, आई नॉट का 1 एम्पियर आ रहा है, तो पीक वोल्टेज और पीक करंट पता है, तो आप इससे रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर को क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। सो रिएक्टेंस इज इक्वल टू वही ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू आई इज 1 इंटू रिएक्टेंस। ठीक है, याद रखें, अगर आप पीक वोल्टेज ले रहे हैं तो उसके लिए पीक करंट ही लेंगे। इससे रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर आ गई 200। रिएक्टेंस आ गई, आप इसके फॉर्मूला में डाल के इंडक्टेंस निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंस इक्वल्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय
इंडक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है यहाँ पर। कैसे पता 100 पाई है? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो टी के साथ जो वैल्यू होती है वही ओमेगा की वैल्यू होती है। So 200 equals 100 pi multiplied by L. L की वैल्यू आ गई पाई बाई टू, सॉरी टू, टू बाई पाई, टू अपॉन पाई। तो ये डी आंसर आ गया। ठीक है। Aeroplane is flying in a straight line at a constant altitude. If a wing gust strikes and raises the noise of the airplane, the nose will bob up and down until the plane eventually returns to its original altitude. Are oscillations are these oscillations are undamped, underdamped, critically damped, overdamped? ओवरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड तो गए। अब अनडैम्प्ड तो नहीं है, ये डैम्प्ड ही है, लेकिन थोड़े से डैम्प्ड है, इसलिए अंडर डैम्प्ड बोल देंगे, कम डैम्प्ड है। ये वापस से प्लेन अपनी पोजीशन पे आ गया ना, इसलिए an electron describes a circular orbit of 2 centimeter. मतलब it is moving on a circular orbit of 2 centimeter radius in a uniform magnetic field. If the speed of the electron is double, then the radius of the orbit will become, again, centripetal force required to keep the electron is mv squared over r, right? Radius is 2 centimeters. If the speed of the electron is doubled, so centripetal force is not increasing, right? Because centripetal force to fix होगी. It's the same force which is provided by the magnetic force, and magnetic force is equals to B Q V. वो क्या कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, स्पीड डबल कर दी तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपकी डबल हो गई, राइट? यहाँ स्पीड डबल की, सेंट्रीपिटल फोर्स which is required to keep it is going to increase 4 times. तो ऑल द मैग्नेटिक फोर्स आपने डबल की, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी डबल नहीं हो पाई। Then the radius of the orbit will become, let's do this question in an alternative with an alternative method. Now we know that the magnetic force provides the centripetal force, right? Magnetic force is VQV and centripetal force is MV squared over R, right? So V and V cancel out. Now we need to make an equation that would show a relation between R and V. Okay, because we need to find that out. If the speed and the radius, so speed and radius have to be related. So V and R. So R को उधर भेज दें। So this is R multiplied by BQ upon M is equals to V हो गया, यानी कि V is equals to BQ over M multiplied by R हो गया। ठीक है भाई, या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर आप सबको इधर भेज दें वो भी कर सकते हैं। सबको इधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा MV over BQ इक्वल्स R। ठीक है, R इक्वल्स MV/BQ। अब मुझे ये बताएं कि M कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, B कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, Q कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, तो ये सब गए, तो मतलब रेडियस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी। अब इन्होंने क्या कहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, जिसको 2 टाइम्स करेंगे तो आपका रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इन्होंने आंसर 0.5, इन्होंने हाफ कर दिया, हाफ नहीं करे। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। ओवरऑल इक्वेशन आपने देखनी होती है, वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन देखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the axis of a solenoid carrying a current. Which of the following is a correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? पहली बात तो ये है, because it is moving along the axis there will be no force acting on it। ठीक है ना, no force acting on it because it's moving along the axis of the solenoid। यानी कि अगर ये solenoid है तो solenoid के अंदर से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर से जा रहा है।
That's the electron moving like this. इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में होगी या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इनके बीच में एंगल तो 90 डिग्रीज का नहीं, एंगल तो 0 डिग्रीज का बनेगा। एंगल जब 0 डिग्रीज का बनता है तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, एफ इक्वल बी क्यू बी साइन थीटा होती है, राइट। साइन थीटा, तो साइन जीरो तो इज जीरो, तो 0 डिग्रीज। द फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इट एट ऑल। The force acts in the direction of the motion. No force acts on it. No force acts on it is the answer. ठीक है। ये पहले भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट ही इसका आंसर था। But as the temperature of the black body is raised, the black body radiation becomes richer in shorter wavelengths. Because temperature बढ़ाओगे, energy बढ़ेगी, तो shorter wavelengths यानी higher frequency बढ़ेगी। Now, at which of the following places the motion of the simple pendulum becomes the slowest? Slowest of, oh अच्छा, K2 मरी पिशावर कराची, तो सबसे स्लोएस्ट मोशन कहाँ होगा पेंडुलम का? मोशन किस चीज पे? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? एल ओवर जी। अब के टू पे क्या होगा? अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है, राइट। के टू जो कि हाईएस्ट मतलब पीक इन पाकिस्तान है, जी की वैल्यू कम होगी के टू पे, तो टाइम रिक्वायर्ड इज गोना बी ग्रेटर, सो इट्स गोना बी द ग्रेटेस्ट ओवर देयर। ठीक है। The next equation of a system with amplitude A is given by the formula sin omega t, सही है। A is equals to A naught sin omega t, यही फॉर्मूला होता है। Next, how much more thumb pressure must a nurse use to administer an injection with a hypodermic needle of inside diameter 0.3 millimeter compared to the inside diameter? दोनों inside है भाई। वाह भाई वाह। Assume that two needles have the same length and the volume flow rate is the same in both the cases. Inside diameter 0.3 होगा, outside diameter 0.6 होगा। अच्छा, दो दो डायमीटर दो है, क्योंकि हाउ मच मोर कम प्रेशर इज रिक्वायर्ड। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह से ले जाते हैं सर, ठीक है। अब एरिया सर्कुलर एरिया है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, सो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर भी अगर कर लें तो ये इस तरह से बन जाता है। अब प्रेशर इन ए जो है वो 4 एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर है, सही है, और दूसरे वाले में 4 एफ अपॉन पाई डी, लेकिन डी की जगह क्या है, डबल है ना, तो 2 डी का होल स्क्वायर है। 2 डी होल स्क्वायर में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, टू का स्क्वायर होगा, राइट। ये फोर हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 टाइम्स 4 एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में? अब ये एरिया है, याद रखिएगा, एक सेकेंड। ये प्रेशर है, प्रेशर। तो किसका प्रेशर ज्यादा हुआ फिर? इसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका एरिया कम है। कितना? 4 टाइम्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये 1/4 है। जिसका एरिया ज्यादा है उसका प्रेशर 1/4 है, और जिसका एरिया कम है, अच्छा, ये वो प्रेशर है जो कि रिक्वायर्ड है। These are the pressures which are required। तो हमें ये भी पता है कि अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो 4 टाइम्स एज मच, ये आपका आंसर है, ठीक है। If the length of the second pendulum is L, then the length of the pendulum having a period of 1 second is gonna be what? Length of the second pendulum is L.
Length of a pendulum is L. Length of a second pendulum, अच्छा 1 second की बात हो रही है. Second pendulum is L. Okay, guys, so second pendulum is the pendulum whose time period is 2 seconds. Okay, I just found that out. So 2 is equals to 2 pi under root L over G. Say we can calculate the value of L. Okay, we can calculate the capital L, I mean. So it's gone. It's going to be 1 over pi, or let's just keep it the way it is. Okay, so if the time period is 2 seconds, then it's going to be capital L. Okay, time period is 1 second. What's going to be the value of L? That's the question. Fine. Meaning if we have reduced the time to half, what would be the value of L? So time is equal to 2 pi under root L over G, right? Let's make L the subject. So T over 2 pi whole thing squared multiplied by G is equals to L. Okay, now if you double the time, sorry, if you half the time, half किया है ना हमने from 2 seconds to 1 seconds. Time को, if you half the time, so half is going to get out and it's going to become 1 over 4, right? So L is going to decrease 4 times. Okay, because L is proportional to T squared. L is proportional to T squared based on this formula. So if time becomes half, L becomes 1/4. Okay, because half the square is 1/4. So L over 4 is the answer. In RLC circuit and a resonance, the voltage RL and C are 10 volts, 30 volts, and 30 volts. Then the applied voltage is going to be how much? Series circuit, we've got a resistor, inductor, capacitor की RLC circuit हमारे पास. R is 10 volts, L is 30, and this is also 30 volts. Then the applied voltage is going to be how much? Let's see. Guys, in this question, there is a key term that we need to look at, and that is resonance. And at resonance, in RLC circuit, the applied voltage is equal to the voltage across the resistor. It's 10 volts here, shouldn't be. Okay. Then 157. Let an EMF of 120 volts of negligible internal resistance connect across a resistance of 1000 ohms and the current flowing through the circuit will be. So we've got the voltage of 120, resistance of 1000, current I is equals to V over R. Yeah, this turns out to be 120 into 10 to the power of minus 3 amperes. You can see. The glider moves on a horizontal surface back and forth. Okay, but what exactly are they asking? We don't know. The first excitation energy of hydrogen will be minus 13.6 electron volts with the 13.6. Number of LED segments used in the calculator display 8.
Let me just verify this quickly. 7 is fine. Ratio of angular speed of moon around the Earth to the and its angular speed about its own axis is Earth to moon angular speed is what needs to be found. Angular speed, like omega. V is equals to R omega is the formula. So omega or omega is also equals to 2 pi upon T, 2 pi upon time period. Okay. Now, time period of Earth is 24 hours, and time period of Moon around the Earth is also 24 hours. So 1 is to 1 is fine. The 6 strings of guitar are the same length, they are nearly the same tension, but they have different thickness. On which string do waves travel the fastest? The thickest string, the thinnest string, the wave speed is the same, or none of the above. Okay, so they are under the same tension, same length, but different thickness. Okay, so how would they travel?